and we're going to try to add on our special guest for today. Comment down below where are you watching from today. Hare Krishna. Nikita, Hare Krishna. Hare Krishna. Radhe Radhe. So today we are reading from Srimad Bhagavatam. This is Canto 1, the first canto, and we are reading chapter 5 of Srimad Bhagavatam, which is Narada's instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva. And today is a very special class because we will be doing both Hindi and English. So any of you who have difficulty in understanding can take this opportunity to have both Hindi and English. Hare Krishna, Krishna devotee, I'm so happy you joined. We're just getting ready to start our class. Today we have a very special guest joining. And I will give you a little bit of an introduction of who she is. So her name is Nalini Kanta Dasi, and she is actually my mother-in-law. And I believe she was able to join. Now I just need to wait for her to flip the camera towards her face. Camera का option है वो flip करो आप. So today's class is extra special because we will be doing Hindi and English translation of chapter 5. So this is Nalini Kanta Dasi, and she actually is my mother-in-law. Other than that, she has been studying the Shastras and the Vedas for over 25 years now, and is way more advanced and senior to me in these topics. So I thought it was very important to add her in. Hare Krishna. Hare Krishna. तो आज हम शुरू करेंगे. एक वर्स मैं इंग्लिश में बोलूँगी और एक वर्स आप हिंदी में बोलोगे और ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे. Welcome. Krishna devotee, I will check my my settings on my Instagram. I have actually not been able to get any new messages from people who I don't follow, so I will try to see what the issue is with that, and then I will get back to you on that for sure. So today we are starting with Narada's instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva. So I'm going to start with the translation in English, and then Nalini Mataji will start with text 1 in Hindi. So Sutta Goswami said, "Thus the sage amongst the gods, Narada, comfortably seated, apparently smiling, addressed the rishi amongst the brahmanas, Vedavyas." सेकंड तो आप पहला वाला ही हिंदी में आप बोलो, फिर उसके बाद सेकंड वाला बोलेंगे. सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देव ऋषि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि व्यास देव को संबोधित किया. वाह, इन हिंदी में कितना मतलब अलग ही साउंड करता है, जैसे एकदम मतलब आदर के साथ, और इंग्लिश में बहुत ही प्लेन लगता है, और हिंदी में अलग
सुनने में, अगर मैं हिंदी पढ़ सकती तो मैं डेफिनेटली हिंदी में पढ़ने का ट्राई करती, बट आई कैन नॉट रीड हिंदी सो वेल. Addressing Vyasadeva, the son of Parashar, Narada inquired, "Are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of self-realization?" तात्पर्य, नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वह महर्षि व्यासदेव की को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे. जैसा कि व्यासदेव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत ना करने के कारण उत्पन्न था. नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से उसकी पुष्टि हो गई. ये का पटपट है. तात्पर्य. ठीक है, तो अब आप सेकंड वाला भी वर्स का ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने सेकंड वाले का पढ़ लिया था. नारद उवाचा. व्यासदेव को प्राशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? Your inquiries were full and your studies were also well fulfilled, and there is no doubt that you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata, which is full of all kinds of Vedic sequences elaborately explained. तो अभी वर्स टेक्स्ट नंबर 3 का ट्रांसलेशन. तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है. इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है. तो इसमें ऐसा लग रहा है कि नारद मुनि एक तरीके से उनको चिढ़ा रहे या फिर उनको बोल रहे कि क्या तुम खुश हो या नहीं, मतलब जो अंदर बात चल रही है उनके मन में वो निकलवा रहे हैं वो बात कि क्या चल रहा है उस समय, कि वो जानना चाहते हैं कि कुछ तो है जिस वजह से वो ना खुश है, तो वो क्या रीज़न है. You have fully delineated the subject of impersonal Brahman, as well as the knowledge derived therefore. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? Verse number 4. तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है. तो इतना सब होते हुए भी हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? इसका तात्पर्य, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है. इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है. अतः व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता. तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए? Srila Vyasadeva said, "All you have said about me is perfectly correct. Despite all this, I am not pacified. I therefore question you about the root cause of my dissatisfaction. For you are a man of unlimited knowledge due to being the offspring of one Brahma who is self-born without mundane father or mother." तो बेसिकली इसमें यही हो रहा है कि व्यासदेव बोल रहे नारद जी को कि मैं क्यों ना खुश हूँ, आप बताओ, आपको बेटर पता होगा मेरे से, क्योंकि आप ब्रह्म पुत्र हो और आपका कोई मंडेन माता पिता नहीं है. मतलब हाँ, मतलब भौतिक में माता पिता आपके नहीं हैं, तो आप
बताओ कि मैं क्यों ना खुश हूँ. मतलब वो इतना कंफ्यूज थे इस सिचुएशन में कि उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतने अनसेटिस्फाइड थे. बिल्कुल। तो भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है. इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है और यही समस्त विषादों का मूल कारण है. इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो. अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है. नारद के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है. आगे के श्लोक में हमें बताया जाएगा. My Lord, everything that is mysterious is known to you because you worship the Creator and the Destroyer of the material world and the Maintainer of the spiritual world, the original personality of Godhead who is transcendental to the three modes of material nature. तो यहाँ पर हाँ बोल रहे हैं कि व्यासदेव बोल रहे हैं कि आप जो भौतिक जगत के समस्त सृष्टि करने वाले की पूजा करते हैं, तो आप प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं. जो भगवान है उनकी भक्ति करते हैं. तो आपको सब पता है, तो इसलिए आप मेरे बारे में बताइए कि मेरे असंतुष्ट होने का कारण क्या है. Like the sun, your goodness can travel everywhere in the three worlds, and like the air, you can penetrate the internal region of everyone. As such, you are as good and as well pervasive supersoul. Please, therefore, find out the deficiency in me, despite my being absorbed in transcendence under disciplinary regulations and vows. तो यहाँ पर ये बता में विचरण करने वाले हैं, वायु के समान है और हर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं. इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं, उनके समान हैं. तो व्यासदेव उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने इतने सारे व्रत वैरों का सब पालन किया है, उन सबको करने के बाद भी मैं असंतोष हूँ. तो कृपा करके मेरे अंदर जो कमी है वो आप बताइए, उसको खोज के निकालिए. So now finally, Narad Muni starts to reply. Shri Narad said, "You have not actually broadcast the sublime and the spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless." तो यहाँ पे नारद जी ने अब कहा है कि वास्तव में आपने जो है भगवान की जो अलौकिक निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया. जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वे व्यर्थ समझा जाता है. जो भगवान को संतुष्ट नहीं करता कोई भी दर्शन शास्त्र, तो वो व्यर्थ ही माना जाता है. नारद मुनि इस प्रकार से व्यासदेव जी को कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपने कहाँ पे गलती की है. Although great sage, you have very broadly described the four principles beginning with religious performances. You have not described the glories of the Supreme Personality of Vyasadeva. तो इस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे हैं कि आपने धार्मिक कृत्य मतलब 4 पुरुषार्थ जो होते हैं, हमारे 4 पुरुषार्थों का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है. किंतु आपने क्या गलती की है कि भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया अच्छे से. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows, since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode. They do not derive any pleasure here.
तो यहाँ पे बोल रहे हैं और नारद मुनि जी की जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवे के स्थान के समान मानते हैं, क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो अब मैं शेयर करूँगी एक छोटी सी चीज़ जो हमने पिछले क्लास से स्टार्ट किया था, which is the 10 subjects of Srimad Bhagavatam, and all the subjects are sprinkled throughout the whole Srimad Bhagavatam. तो जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो जो ये 10 सब्जेक्ट्स है, ये पूरे श्रीमद् भागवतम में मेन सब्जेक्ट्स जो आते हैं, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि हम इसको मेमोराइज कर पाए, याद कर पाए, बाय हार्ट कर पाए। तो सबसे पहला है सर्गा, क्रिएशन, विसर्गा, सब क्रिएशन, स्थाना, मेंटेनेंस of the planetary systems, Poshana, protection of devotees, Manvantara, reigns of Manu, Uti, action, फिर आता है ईशानु कथा, जो अभी जो टॉपिक चल रहा है बेसिकली वही कि भगवान, द साइंस ऑफ गॉड, फिर निरोधत, अनाइलेशन, मुक्ति, लिबरेशन, और लास्ट आता है आश्रय, द सुप्रीम सरेंडर एंड शेल्टर टू लॉर्ड कृष्णा। तो ये 10 सब्जेक्ट्स जो मेन हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊटी, मनवंतरा, ईशानु कथा, निरोधत, मुक्ति, आश्रय। तो ये भी मैं धीरे धीरे जय को सिखाऊंगी। पिछली बार वो भी बोल रहा था हमारे साथ, आज थोड़ा सा उसका अभी भी कोल्ड है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नहीं ज्वाइन कर रहा है, पर अगली बार से होपफुली ज्वाइन कर पाएगा। सो अब हम वापस आते हैं टेक्स्ट 11 जो हम अभी पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, जो है चैप्टर 5 कैंटो 1, एंड हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट 11 से, एंड वी आर रीडिंग इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। सो we're trying to inclusify everyone who is watching, anyone who is watching. If you're watching from India, please comment down below if you're watching from India. If you're watching from the United States or any other country, comment down below which country you are watching from. And let's move forward. I'm waiting for those comments. I see how many viewers are on, so please comment down below which country you're watching from. Thank you, Krishna devotee. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord, is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a resolution in the impetuous lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard and sung and accepted by purified men who are thoroughly honest. दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुनाया, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितान निष्कपट होते हैं। So, just to recap, this whole first canto is the introduction to the Srimad Bhagavatam. They are setting the stage
they're explaining how the Srimad Bhagavatam, literally like word for word, they're explaining why the Srimad Bhagavatam was written, how it was written, how Vyasadev got the the word I'm looking for, I'm not remembering it, but basically he got in the inspiration from Narad Muni. Narad Muni inspired him and gave him that idea, gave him that inspiration, that idea to write the Srimad Bhagavatam so he could be mentally satisfied, because he was very remorseful, very upset, not satisfied at the moment after writing the Mahabharat. After writing the Mahabharat, he was not satisfied. He felt like there is something lacking. मतलब यही फील हो रहा था कि कुछ तो कमी है, कुछ तो रह गया, मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ, जो भी किया है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है. असंतुष्ट क्यों है व्यासदेव? तो नारद मुनि यही बता रहे हैं कि कारण क्या है. कि कारण यही है कि आपने पुरुषार्थों के बारे में तो बहुत ही अच्छे से व्याख्या की है, मगर उसमें कमी क्या है? भगवान की महिमा का वर्णन आपने बहुत ही कम रूप में किया है, जो कि सर्वोपरि है. भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में ही अगर आप वर्णन करते हैं तो उसी से ही आत्म कल्याण और आत्म संतुष्टि होती है. तो आपने जब इतना सारा साहित्य लिखा है, उसमें खुद ही आप संतुष्ट नहीं है, तो उसको पढ़ के दूसरे कैसे संतुष्ट होंगे? हाँ, सही बात है. यही बात नारद देव उनको समझा रहे हैं व्यासदेव जी को. तो जो अपने लाइफ में संतुष्ट नहीं है, रोज आप भागवतम खोलो. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक शब्द पढ़ो. अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो आप एक लाइन पढ़ो. और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो एक वर्स पढ़ने से शुरू करो. और धीरे धीरे जैसे आपकी रुचि बढ़ेगी तो आप अपने आप ही एक चैप्टर, एक कैंटो, धीरे धीरे पूरा भागवतम ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं. और पूरे भागवतम में 335 चैप्टर्स रहते हैं. तो अगर आप रोज का नियम रखते हैं कि एक चैप्टर आप रोज पढ़ना चाहो तो आप एक साल में ख़त्म कर सकते हैं. और अगर आप रोज पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाओ, आधा भी चैप्टर अगर आप पढ़ो तो आप 2 साल में पूरा भागवतम ख़त्म कर सकते हो. तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है. अगर आप सिर्फ एक शब्द रोज पढ़ो, खोल के बस बुक लो हाथ में, ऐसे खोलो, एक शब्द पढ़ा, बंद कर दो, बस इतना अगर आप शुरू कर सकते हो तो अपने आप ही जो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे व्यासदेव और नारद मुनि का जो डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन भी किस लिए हो रहा है? हमें सुनाने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें सुनाने के लिए कि किस वजह से, हमें एक्सप्लेन करने के लिए, स्टोरी के माध्यम से हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम उस चीज़ को समझे कि क्यों ये चीज़ हमें सुनाई जा रही है. तो जो होता है ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराण में, वो सब स्टोरी के माध्यम से हमें सिखाया जाता है. सब क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हमारे मन की क्वेश्चंस को ख़त्म करने के लिए. और जैसे कि पहला चैप्टर ही शुरू हुआ है किस चीज़ से? क्वेश्चंस से. तो अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो आपको, मतलब जैसे कि अगर आप स्कूल में हो तो, अब मुझे नहीं पता हर एक के स्कूल में शायद अलग होता होगा, पर स्कूल में हो आप, जो बच्चा स्कूल में क्वेश्चंस करता है सबसे ज़्यादा, कुछ लोग उसको समझते कि ये ना समझ है. और जो अच्छा टीचर है वो उसको सबसे बेस्ट स्टूडेंट मानता है, क्योंकि जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसके अंदर वो सच्ची में वो सारी चीज़ें जा रही है. जिज्ञासा करने वाला ही प्रगति को प्राप्त करता है, वो प्रगति की तरफ बढ़ सकता है. जिज्ञासा, इसीलिए शास्त्र में हमारे हर जगह पे जिज्ञासा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. जिज्ञासा तो ऋषि मुनि सारे ही जिज्ञासा कर रहे हैं प्रश्न के रूप में अपनी. तो ये जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है. अगर अपने असंतुष्ट को, अब व्यासदेव भी जिज्ञासा ही कर रहे हैं. So in a similar way we can think of it as
like a child. Anyone who has a child, if they have a 2-year-old, a 3-year-old, a 4-year-old, the questions are never ending. So that is how we have to become for knowing about Krishna. We have to become like a child and ask questions and ask questions and keep asking questions. And if at some point I get questions which I'm unable to answer, I will be noting down these questions, and in future videos, when I have certain people join my live that are qualified enough to answer these questions, then I will keep these questions for a later date. And पद्मलोचनी देवीदासी आपको प्रणाम बोल रही है. प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा. तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. So, Ronald Paulson, I am reading from the Srimad Bhagavatam. This is one of our very old scriptures from India. And this is one of our prime scriptures that is taught. And this is similar, like any religion that you follow, you will find the essence of it all is all love for God. Doesn't matter who you believe in and who you worship. And we do these classes whenever we have time. So if this is something interesting to you, please join us and listen. And I would love to hear about your realizations, your life, and what you believe in, and how you perceive your belief for God, what religion you are from. So please comment down where you're watching from, and comment how do you feel about what we're reading. I'm reading both in English and in Hindi. We have a lot of followers from India who are watching. So we are reading both in English and in Hindi to make it inclusive. If you have any questions, please keep asking those questions. As we get to the end, we will be answering everyone's questions. Thank you, Radhe. Kumari Radhe is joined. She's watching from Vrindavan. So, knowledge of self-realization, even though free from all material affinity, does not look well if devoid of conception of the infallible. What then is the use of fruitive activities which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not utilized for the devotional service of the Lord? So right now we are reading from Canto 1, chapter 5, and we are on verse number 12. Yeah. आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता. यदि वे अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं. So this is नारद मुनि ये सब बोल रहे हैं अभी व्यासदेव को. And just to elaborate, Vyasadev is the author of the Srimad Bhagavatam, and this first canto is setting the scene. We are in the introduction part of, and there are 12 cantos. So this is the first canto. This is the very beginning of our series. If you want to watch the previous classes, you can go to Nimai Rathore Vlogs, and in the live video section, you will see all the previous classes, and you can catch up on what you left off of. O Vyasadev, your vision is completely perfect. Your good fame is spotless. You are firm in vow and situated in truthfulness, and thus you can think of the pastimes of the Lord in trance for the liberation of the people in general from all material bondage.
हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत से दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतः तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। So any of you who are watching from YouTube, if you double tap the screen, you can give us a like. If you like videos like this, please give us a like and go ahead and subscribe to our channel. We go live every day, almost every day, or try to go every day, but if not every other day. And this is a special class that we are doing. So please go ahead and double tap the screen to like, and don't forget to subscribe as well. Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names, and results. To agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place. तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वे प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो इससे मुझे ये समझ आया कि जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, किसी को अगर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है, और वो अलग अलग टाइप के खाना बनाने में एक्सपर्ट है या रोज़ एक ही चीज़ बनाने में एक्सपर्ट है, पर जब वो कोई अपने मन से एक नई डिश क्रिएट करता है, कोई शेफ़ है, अगर वो एक नई डिश क्रिएट करता है और फिर वो उस डिश को खुद भी उसका फेवरेट डिश है और वो एक नई डिश क्रिएट करता है, खुद भी वो नई, मतलब वो जो बनाने में जो उसको मेंटल पीस या फिर कोई जो चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, वो जब आप करते हो और एकदम ऐसा लगता है कि टाइम कहाँ गया, क्या टाइम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता, वो व्यासदेव के लिए उस तरीके से वो जो लिखना होगा श्रीमद् भागवतम को, वो उस तरीके का होगा कि उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, एकदम वो मतलब पीस हो जाएगा उनके माइंड में। जैसे कि किसी जो आपकी रुचि होती है, जिस चीज़ के लिए आप जब उस काम को करते हो, जो आपके मज़े वाला काम होता है, जब आप वो काम करते हो तो वो जो फीलिंग होती है बेसिकली वो उनको उस चीज़ से फील होगी जब वो भगवान के बारे में लिखना शुरू करेंगे। The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable, because they are guided under your instructions, and they will accept such activities in the name of religion and will hardly care of the provisions. सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसा कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की परवाह नहीं करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था, एक्चुअली कल ही सुना था प्रभुपाद के क्लास में, कि क्या होता है कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीज़ों को अलाउ किया गया है। जैसे कि मीट ईटिंग को किस तरीके से अलाउ किया गया है कि आप खा सकते हो, पर आपको काली माँ को गोट को मतलब सर्टेन डे पे ऑफर करना पड़ेगा, वो भी जिस दिन अमावस्या होता है। सो ऑन ए नो मून डे you can offer a goat to Kali, and at that point you are allowed to eat that meat. पर इससे क्या क्रिएट करने की कोशिश थी या फिर कोशिश है कि एक रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा कि एक तो जो अमावस्या है वो महीने में एक बार आता है, तो रोज ना खा के वो अमावस्या वाले दिन होगा वो चीज़।
दूसरी बात, जैसे ही आप वो चीज़ ऑफर करोगे और वो मंत्र बोलोगे कि अब मैं तुम्हें काट रहा हूँ, अगली बार तुम्हारी बारी होगी कि तुम मुझे काट सको, और उसको एक तो दूसरी चीज़ के वो गोट को बाकी सब जन्म छोड़ के डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ मिल जाएगा। तो ये जो सब चीज़ें बनाई गई थी, जैसे जो वेदास में बनाया गया था, ये एक रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस बनाया है कि उस चीज़ों को फॉलो कर करके धीरे धीरे लोगों को अंदर समझ आए, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है या जो पैशन में है, जो बहुत जो ज़्यादा अपनी अपनी मन की इच्छा से जो मतलब खाने की इच्छा से हाँ कर रहे हैं अपनी इच्छा से। हाँ, जो उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहा है, तो उसके लिए वो एक रिस्ट्रिक्शन या एक रूल बना दिया ताकि वो उस चीज़ को कम कर पाए या अपने आप को एक कम कर पाए, और धीरे धीरे फिर उस चीज़ को समझ के कि अब ये देखो मैं सबको मार रहा हूँ, तो इनको भी हक बन रहा है कि अगली बार ये मेरे को मारे, तो उस साइकिल को भी तोड़ने का। तो यही वो एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि वही चीज़ नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव को कि आपने हर एक मज़े मस्ती करने के लिए सब अलाउंस दे दी है, जिसको जो मन करता है, जो भाता है, जो अच्छा लगता है। So Krishna devotee has a comment here. But here in India, goats are killed in weddings as tradition. Is this right in the name of Kali Mata? So as far as I know and I understand, there is like if someone is following the religious principles of Kali or Durga, they have a certain days out of the month, like on Amavasya, where they can offer not just शादी में तो ऐसे तो नहीं होता ना कि शादी में शादी हो रही है किसी की तो ऑफर करके गोट को और फिर मार दिया, ये तो मन मर्जी हो गई है। हाँ, वो अपनी अपनी मन की संतुष्टि के लिए, Yes. अपनी लालसा के लिए। So that is basically sense gratification. They're changing, and this is something very small, like people change rules all the time for their own personal gain. This is basically changing already a it's like changing something that's already liberal to even more liberal according to your needs and your desire. So as far as I know, that is not written that just because someone is getting married, you start killing. There's certain days where when you worship goddess Kali, then at that time you can do that. But even that comes with consequences. Why would you want to kill a goat to be killed again as a goat? क्यों क्यों करना चाहोगे आप वो चीज़, जब आपको पता है कि आपको खुद वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी? और पहली बात तो जितने जितने गोट मारोगे उतने तो गोट के ही जन्म लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं व्यास देव जी को कि आपने अपने द्वारा ये प्रमाणित कर दिया है कि आप ये सब चीजें अनुचित कार्यों को कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आप कर सकते हो, तो ये आपने सही नहीं किया है, घृणित तथा अत्यंत अनुचित है कि आपने इसका मार्गदर्शन दे दिया है लोगों को शास्त्रों में देकर, तो इसके नाम पर आपने उनको अनुचित को उचित करके दे दिया है। तो और आज भी वो चीज चले जा रही है, तो इससे निषेध की परवाह नहीं करेंगे वो लोगों को। आपने ये कॉन्सिक्वेंसेस का फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी हो, वो चीजों की परवाह नहीं करेंगे। The Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality retired from the activities of material happiness deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. Hare Krishna, Riya Kapoor.
भगवान असीम है। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। तो अभी एक और क्वेश्चन आया है कि क्या माता रानी या काली माता इस चीज़ से खुश होंगी, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि उनको बहुत खुशी मिलती है कि आप कोई बकरी को काटो या फिर कोई भी एनिमल को सैक्रिफाइस करो, तो क्या वो सच्ची में उस चीज़ से, ऐसी चीज़ों से वो खुश होंगी? Yeah, I'm reading it. So Jay has joined us over here. Hi Krishna. So क्या लगता है आपको कि इस चीज़ के बारे में कि क्या वो उस चीज़ों से खुश होती है? तो क्या कैसे खुश होंगे वो? जो मुझे समझ आया, जैसे कि अगर आप उनकी कहानी देखो, जो जड भरत है, जो अभी आएगा आगे, द स्टोरी ऑफ जड भरत will be coming soon. I think it's a little quite far down the line, but what we can understand from that story is that in actuality, Kali Mata or Durga, she does not want to kill anyone, but people misinterpret that she will be satisfied or will be very happy. It actually makes her very, very sad to see people or any animals being killed. And if you've heard of the Jud Bharat story, then you know that instead of killing the offering, she ended up killing all the demons who were offering the sacrifice. So that is a very good example of a story where it's very clear that giving human sacrifice, giving animal sacrifice, that can never make Mata Rani happy. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, which is the first canto, and we are reading chapter 5 from Canto 1, and we are on verse 16, and this is our 5th class of this series. If you want to watch any other previous classes, you can go to our YouTube channel, Nimai Rathor Vlogs, and it has all the previous classes saved in the live section. So right now we are reading from chapter 5, which is Narada's instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva. So I hope, Krishna devotee, that answers your question on if that would make her happy. The Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality, retired from the activities of material happiness, deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness, though descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. So if anyone is looking to purchase the Srimad Bhagavatam or to read, you can read online. You can listen to audiobooks online on YouTube. And you can also purchase the Srimad Bhagavatam from any ISKCON temple or from BBT online. So if you need any more information on where to buy Srimad Bhagavatam, please DM me directly. So we have another questions by the sages. That is chapter 1. What chapters? Right now we're reading Narada's instructions. Chapters, divine service. Divinity Divine and divine service.
And then chapter 3, Chapter 3. Krishna is the source of all incarnations. What happened to that? Something fell from the shelf. Can you say Krishna? Krishna Krishna is the source source of all incarnations. of all incarnations. And then up chapter 4, Chapter 4. appearance Divine appearance beings. of Sri Narada. Appearance Sri Narada. Narada. Do you know who Narada Muni is? Who is he? Mutigada. So we have one more question. What about when you buy it from the store and cook it at home, or buy it from a restaurant? What if you buy? So this question is from Swasti or Sasti Dasi. So if you buy meat from a store or buy and cook at home, then there's no difference between, I mean, I would say in a way somewhere it is better to be offering it to Mata Rani. At least that goat or that animal has a chance of becoming a human after being sacrificed. But if you're just directly buying from the slaughterhouses, from the industry, the meat industry, then there's no hope for the karma that you're taking on upon yourself. So, Jay, you wanna try again? Fold your hands. I have some guesses. Okay, tell me. What guess? What? I Okay. guess We're gonna keep reading, okay? what guess in that? I need money to eat ice cream. Okay. So आप पढ़ सकते हैं text number 16. No, text number 14. 16 पे आ गया. Okay, 16. भगवान असीम है के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है. अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ. 17 है. One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वे कभी-कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता. इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for the purposeful end which is not obtainable, even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patal. As far as happiness derived from the sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in the course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. So from this verse मेरे को remind होता है जो भगवद गीता का verse है, आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्ति नोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते.
From the highest planet to the lowest planet are all places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. So this is a very similar verse right here. And that is this verse, Abrahma Bhuvana Loka, is one of our key verses from the Bhagavad Gita. That we have many key verses in the Srimad Bhagavatam and in the Bhagavad Gita. So this is one of our key verses. मेरे को याद हुआ, मतलब रिमाइंड हुआ ये पढ़ने के बाद. जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उत्तम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्न लोक तक पाताल तक विचरण करने से भी पर्याप्त नहीं है. जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं. My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others, fruitive workers, because a person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again. हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति के ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार भी किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता. तो इससे ये समझ आता है कि हमने कभी वो फीलिंग कभी हमें फील ही नहीं की, क्योंकि हमें कभी वो फीलिंग हुआ ही नहीं कि हम बार बार वो फील करें. तो इससे मुझे ये समझ आया. मैं सबके लिए चेक कर रही हूँ कि जो मैंने वर्स बोला था अभी वो कौन सा टेक्स्ट है. एंड आफ्टर दिस हम एक और वर्स पढ़ेंगे, तो फिर एग्जैक्टली चैप्टर 5 का 40 वर्सेस है चैप्टर 5 में. तो 20 वर्स के बाद हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, and we are reading Canto 1, Chapter 5, and we are on text number 19. And Abrahma Bhuvana Loka, the verse that I just said, was Chapter 8, verse number 16. So if any of you want to reference back and learn this verse, it's Chapter 8, verse number 16 of Bhagavad Gita. The Supreme Personality of Godhead is Himself this cosmos, and still He is aloof from it. From Him only has the cosmic manifestation emanated. In Him it rests, and unto Him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. कौन पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप भी हैं. उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद भी उन्हीं में प्रवेश करता है. तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है. So this is where we're going to end our reading for today. If anyone has any questions, please go ahead and leave those questions down below. And in the meantime, while we wait for your questions, we're just going to go over our mind map for chapter
for the Srimad Bhagavatam Canto 1, which is the first canto, which has 19 chapters. So Canto 1, 19 chapters, and it has 4 subjects, 4 subtopics. So the first subtopic is called Narada and Vyas, chapters 1 to 6. Then we have Krishna and Hastinapur and Dwarka, chapter 5 to 11. Then we have Parikshit born, Pandavas renounce, which is chapters 12 to 15. Then we have the last section, which is Parikshit, chapters 16 to 19. So right now we are on chapter 5 right here, which you can see. I don't know if you can see clearly, but I'm going to pull up the other picture so everyone can see. And I shared the mind maps on my story as well, if any of you want to look at that. One second, I'm just going to pull up. Yes, right here. So these are the small icons for each chapter. So we have chapter 1, which is questions by the sages. Chapter 2, divinity and divine service. Chapter 3, Krishna is the source of all incarnations. Chapter 4, appearance of Sri Narada. And now we are on chapter 5, which is Narada's instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva. It's a long one to remember, but you just have to keep repeating it over and over again. Narada's instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva. And tomorrow we will be continuing this chapter, which has 40 verses in it. And if you look at these maps, you can even see on top it says 40 verses. So literally these are like pocket-sized guides to reading the Srimad Bhagavatam. And then after that, our next chapter is going to be conversation between Narada and Vyas, which is going to be, I'm assuming, sometime next week. So we're going to just go over one time the breakdown of the full Srimad Bhagavatam, which is, okay, I'm going to give everyone a little quiz today, since we have been doing this for about this is our, I believe, our 5th or 6th class today. So I have a little quiz for everyone. So I want to ask you, comment down how many cantos are there in the Srimad Bhagavatam? And I'll give you all 1 minute to answer. How many cantos are in the Srimad Bhagavatam? I'm still waiting for an answer. The question is, how many cantos are in the Srimad Bhagavatam? Okay, we got one answer. That is correct. 12 cantos. That is correct. Okay, so we're going to go over. So every day I'm going to quiz you. Yes, Padmalochani Devidasi, we have 12 cantos. So we have 12 cantos. 10 subjects, which we went over today: Sarga, Visarga, Sthana, Poshana, Uti, Manvantara, Nirodhat, Mukti, and Ashraya. No, I forgot. Ishanukata, Manvantara, Mukti, and Ashraya. So that's the 10 subjects. And then we have 55 subtopics. So these subtopics that we're learning, the first canto has 4 subtopics. Number 1 subtopic is
Narada and Vyas, which is what we're reading right now. Narada and Vyas. Second section is Krishna and Hastinapur and Dwarka. Third section is Parikshit born, Pandavas renounced, and then the last section is Parikshit. So that is the first 4 subtopics out of the 55 subtopics from the Srimad Bhagavatam. Then we have 18,000 verses and 335 chapters. So next time I will be asking you how many topics there are and how many you can remember out of the 10 topics. Thank you everyone for joining. I see one question from Krishna devotee. So due to her health, she's feeling a little bit low and I'm unable to focus on my spiritual activities. I'm unable to get up at the Brahma Muhurat. How can I strengthen my sadhana? So for this is very simple. First, you need to take care of yourself. You need to recover your health. And then once your health is recovered, then you can continue to do your activities as you were doing before. So the first thing is you have to be healthy from your body and your mind. Your body is your temple. So you must take care of your body first, and before anything else you must take care of your body, because the body is your vehicle to do those activities. To worship Krishna, your body, your vehicle, your temple must be in perfect condition. So you must first get better and then slowly get back to your original routine and your spiritual activities. I hope that answers your question. मम्मी आप कुछ बोलोगे इस चीज़ के बारे में कि कैसे जब बीमार होते हैं तो क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो अपनी शरीर की पहले देखभाल जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो ही आप अपने शरीर के थ्रू ही आप भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा. शरीर थोड़ा सा भी हमारा अगर स्वस्थ नहीं है तो मन की स्थिति भी सही नहीं रहेगी. तो अगर मन सही नहीं तो फिर भक्ति में भी आप नहीं लग सकते. तो शरीर का सबसे पहले प्योरिटी देनी पड़ेगी, उसको स्वस्थ रखना है. Yes, after this class, I will send you a message and I will start sending you the links for the subtopics. And let me know if you receive them. I hope you receive them before the next class so you can work on that as well. Thank you everyone so much for joining. Hopefully we are able to go on again day after tomorrow, every other day as scheduled. And we will be continuing chapter 5 of Srimad Bhagavatam, Canto 1. If you have any questions, you can DM me and I will find out why people are unable to DM me directly, and then we will go from there. Thank you so much for joining. I hope you all have a wonderful weekend ahead, and I hope you're able to open Srimad Bhagavatam and read one word. That is your homework. Every day to read one word. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.